और लग के कर दिखाने में, मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी, और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Good afternoon, everyone. Thank you for joining us on the series of Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai presented by the management of Franchise India with an aim to introduce you with a new brand every day at 12 p.m. With the same aim, today also we have presented ourselves in front of you with the opportunity with one of the most famous business available in the market into health industry. Before I introduce you or tell you about the brand which we are going to introduce you today, let me just run you through with the Q&A process. If you have any questions during the webinar, you can type your question into the Q&A box. We will take up all your questions post our presentation. So while we will run you through with the presentation and brand details, I would request you to keep it more interactive and keep sharing your questions into the Q&A window to explore this platform fully. So our today's brand is Orthocure, India's first chain of specialty clinics for orthopedic problems and gyms for 40 plus age group, is expanding its reach and inviting passionate individuals across Delhi NCR, Chandigarh, Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Pune, and Chennai to become a part of its growing family by starting your own orthopedic and physiotherapy center franchising your city. This is the best opportunity you have to start it with. And to know the details about this brand and to understand it in a detailed knowledge today, I would suggest you to keep writing your questions, keep yourself involving throughout the session, keep sharing your queries so that we can answer you all to make give you more clarity about the brand and the understanding. So today we do have Mr. Sunil Baijal. He is a co-founder of Orthocure in front of us in this panel along with Dr. Ruchita. They are here in front of us today to tell you about the brand, to give you the brief about the brand along with the journey. We do have Mr. Samarthan. He'll be helping you out into the commercial and the breakup. I can see some of you raising your hand, so I would request you to please keep writing your questions into the Q&A box instead of raising your hand, because this is not the right platform to raise your hand. Rather, you can share your questions into the Q&A box. So I would like to request Mr. Sunil now to take up from here and please share details related to your brand and the opportunities you are going to share today on this platform. Over to you, Sunil, sir. Thank you, Neha, very much for the kind introduction. Namaskar. I am Sunil Baijal. I am the founder and managing director of Orthocure Healthcare. And along with me, my team is there, Dr. Ruchita, Dr. Meenal, and Manoj, and a few another the management team. Neha, I'll share the screen, presentation screen, and just tell me if it's visible, and we can get going. It's visible, sir. Okay, great. So we
We are, our brand name is Orthocure. As you can see from the word, you can make out it's meant to cure orthopedic problems. That's what is meant for. कौन सी orthopedic problems? Orthopedic problems like back pain, neck pain, which are so widely prevalent these days, arthritis, and it's also it's a brand, and it's the first chain in India for gyms for 40 to 80 plus age group. आपने gyms तो सारे सुने होंगे जो आजकल बहुत हर नेबरहुड में होते हैं, बट कोई ऐसा जिम नहीं सुना होगा जो कि स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मिडिल और सीनियर एज ग्रुप के लिए है. So this is the uniqueness which we have. And I'll tell you more about this brand. And Orthocure, it's a registered brand with the authorities, and no one else can use their name. So that's a unique thing with us. And I'll take you through the whole concept in the next few slides. But सबसे पहले, जैसे हम कस्टमर क्या कहते हैं, customer is the king. Now here I would say I would like to start with you. Why should you invest and why should you have the franchise of Orthocure? So सबसे पहले बात आती है why in a healthcare now, brand. Now I'm sure you are attending this presentation, so you have some interest already in a healthcare brand. Now, healthcare industry, like you know, is one of the largest in India and is growing at a very fast rate, projected to grow at the rate of 19.27% CAGR from 1922 to 2030. And although India is a young society with lots of youngsters, at the same time, there are a lot of people who are moving into the middle and senior age group as well because our population is so huge, and the healthcare services demand is high, and it's in fact reaches a very small percentage of population even now. So that's the reason for healthcare band. Why you should invest. Now, next question which comes into your mind, of course, is why orthopedic focus clinics. इसके मैं कहूँगा तीन मेजर रीजन हैं. सबसे बड़ा, कोई भी चीज आप मार्केट में लाना चाहेंगे तो उसकी मार्केट बड़ी होनी चाहिए. Now, as per American Orthopedic Association, और most probably सिमिलर डेटा होगा इंडिया का भी, बट इतना इतना डेटा इंडिया का क्वांटिफाइड नहीं है, कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल गो टू अ डॉक्टर. पहला कौन सा है? पहला हमें खांसी जुकाम बुखार हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. और आजकल आपको पता ही है कि क्यों क्यों है. ये जो नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पे, लाइफस्टाइल ट्रेंड, कि आजकल हमारा हम और आप सभी लोग 4 से 5 घंटे फोन पे बिताते हैं. नेक हमारी नीचे झुकी रहती है, हम टेलीविजन के सामने होते हैं, बाकी टाइम कंप्यूटर के सामने होते हैं, नहीं तो बैठे जरूर होते हैं. तो आजकल कोई जो ह्यूमन बींग्स हम बने हुए थे खेती करने के लिए, इधर से भागने के लिए, बट आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बिल्कुल अलग है. तो जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है वो उस तरह से होती नहीं है. यहाँ तक कि आज तक कहने लगे हैं सिटिंग इज द स्मोकिंग ऑफ द करंट जनरेशन. द प्रॉब्लम इज सो वाइड स्प्रेड, एंड सिटिंग आपको इतना नुकसान करता है. हमारी क्लिनिक्स में भी 50% जो पेशेंट्स आते हैं दे हैव बैक एंड नेक प्रॉब्लम्स, एज हाई एज दैट परसेंटेज. Next point would be that aging. Now people are living longer. पहले एवरेज मेरे ख्याल से 50-60 होती थी, अब और लोग आपको पता है लोग 70-80-90 साल तक भी जी रहे हैं. और पहले लोग घोड़ों का दर्द होता था, घुटनों का होता था, आराम से बैठ जाते थे, चलो ये तो एज है कुछ नहीं. बट आज की तारीख में लोग एक्टिव लाइफ लीड करना चाहते हैं. तो इन सब के लिए सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारी क्लिनिक्स में है, और वो मैं आपको बताऊंगा क्या यूनिकनेस है हमारी क्लिनिक्स में जो औरों में नहीं है बाद में. नाउ ये क्लिनिक के बारे में हो गया. नाउ नेक्स्ट आई टेल अबाउट द जिम. नाउ ये दोनों जुड़े हुए हैं और वो मैं आगे बताऊंगा क्यों. जिम, वाई 40 प्लस एज ग्रुप. एंड नाउ जिम्स तो बहुत सारे हैं, है ना. सो वाई दिस एज ग्रुप? बिकॉज in 40 plus age group, it's a fact that as soon as we cross the age of 30, हमारा मसल मास कम होता रहता है धीरे धीरे. 40s 50s में तो बहुत एक्सेलरेशन हो जाती है, तो मसल हमारी वीक होने लगती है. तो हम जो भी खाते हैं खाना, वो मसल में बनाने की जगह इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू फैट, बिल्डिंग फैट, हम मोटे होने लगते हैं इनफैक्ट. और इस एज ग्रुप में
अपनी फिटनेस मेंटेन करना, बोन्स एक्सरसाइज करना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. And that's why this is required in this particular age group to be active, independent, and most important, pain-free life. A lot of pain start coming as you get into 50s and 60s. And what we offer prevents those pains from coming, apart from giving solutions for those pains in the clinics. Number two reason, gym needs for 40 plus age group are very different, which current gyms are not able to provide. Why? Because उस एज ग्रुप में आपको एक तो सेफ्टी बहुत चाहिए होती है, जो हमारी स्पेसिफिक मशीन्स है जिसके बारे में आगे बताऊंगा, जो प्रोवाइड करती है. वो मशीन्स कोई भी यूज नहीं कर रहा इंडिया में. और ऑल्सो ये हमारे जो जिम्स हैं, दे आर रन इन अ मेडिकल एनवायरनमेंट. दे आर एसोसिएटेड विद द क्लिनिक, रन बाय फिजियोथेरापिस्ट, जिससे वो मेडिकल नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती हैं जो इसमें चाहिए होती है. प्लस जो एम्बियंस है वो बिल्कुल अलग है. इस जिम में आपको वो नहीं मिलेंगे लोग इतना मसल बिल्ड कर रहे हैं अपने, या इतनी फास्ट वो कर रहे हैं. दिस इज मेड फॉर दिस काइंड ऑफ एज ग्रुप विच इज लुकिंग टू मेक देयर होल बॉडी स्ट्रांग, बी एनर्जेटिक, बी इंडिपेंडेंट, and not someone who wants to build their biceps. Last but very important, कुछ भी आप स्टार्ट करो तो कुछ अलग होना चाहिए. आपके नेबरहुड में यू विल बी द ओनली ब्रांड which will target 40 to 80 plus एज ग्रुप. ले लीजिए, चलो 80 के ऊपर भी लोग कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से वो नहीं, वो लेट्स से वो इतना इतना जिम में नहीं आएंगे अभी. बट बाहर की कंट्रीज में जाओ तो लोग 80s 90s में भी कर रहे होते हैं, जिम्स में आ रहे होते हैं. बाहर ये कंसेप्ट काफी पॉपुलर है. इंडिया में हम पहली बार ये लेके आ रहे हैं कंसेप्ट जो की है. तो अगर अगर आपको ये मैंने रीजंस आपको बताया, अगर आप जो मैंने अभी तक बताया और आपको लगता है कि हाँ, बैक और नेक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, जिम भी चाहिए 40 टू 80 एज ग्रुप के लिए, हाँ, उन लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, देन यू आर द राइट पर्सन टू टेक दिस फ्रेंचाइज. एंड क्यों, अब अगला क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा कि क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए. नाउ हम इतनी सारी चीजें करनी है. वी कॉल आवरसेल्फ द फर्स्ट चेन ऑफ क्लिनिक्स, नॉट जस्ट लाइक we are the first ones to do it. We are the first ones to bring this concept, but there are a lot of unique things, lot of first things in India which we are doing which no one else is doing. And that's what, आप जब अगर हमें हमारे साथ जुड़ेंगे तो यू विल गेट दैट यूनिकनेस, द यूनिक एडवांटेज. कुछ भी नया शुरू करो और उसे अलग होना चाहिए और उसे बेटर होना चाहिए, और वही हम आपको अभी मैं बताऊंगा. सो दो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आगे ब्रांड में अपना दिखाया है, यहाँ पर क्लिनिक्स एंड 40 प्लस फिट जिम्स. सो क्या है ऑर्थोक्योर. नाउ आपको मैं ये बताऊं क्यों हम अलग है. नाउ विजन ऑफ कंपनीज नेम इज ऑर्थोक्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड. We are the vision is to build India's first, best, and largest organization specializing in treatment of musculoskeletal problems, which are orthopedic problems, muscles और skeletal bones की problems हैं. Through it क्या क्या build कर रहे हैं हम? clinics बना रहे हैं, fitness centers बना रहे हैं, products बना रहे हैं, हम manufacturing में भी हैं. यही बहुत यूनिक है. ऐसा कोई कंपनी नहीं होगी जिसकी क्लिनिक्स भी है और मैन्युफैक्चर भी कर रही है प्रोडक्ट्स. कौन से प्रोडक्ट्स? मेडिकल इक्विपमेंट और products patients के which are linked to solving orthopedic problems. So the concept is orthopedic problems, bones और muscles की problem, उनकी problem solve करने. Then we are also into building surgical facilities through a network of hospitals and also academies for teaching medical practitioners about these about the studies. So मिशन क्या है? मिशन हमारा है टू बी द बेस्ट फॉर पेशेंट्स, क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, क्लिनिक्स एंड सर्जिकल फैसिलिटीज एज वेल एज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटिंग ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, एंड टू बी द प्लेस वेयर द बेस्ट स्टाफ वांट टू वर्क विद अस एंड लर्न. Now, who are the people behind this? I'm the founder and CEO. I have an engineering and MBA background from premier institutes in India, and have worked as in large multinational companies as well as a CEO. And we founded this company about 9 years back. A co-founder is Dr. Meenal Sharma. She's the co-founder of Clinics. She's a very senior physiotherapist, top performer, college, and very good physiotherapist, as well as involved in managing the clinics now. And Mr. Tejwan Singh, he is the co-founder of our products division, where we manufacture
products for export as well as for use for our clinics and franchise clinics. Mr. Tejmal Singh, he is an engineer, mechanical engineer. हमारी सर्विसेज अब क्यों अलग हैं? सब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों अलग है. हमारी क्लिनिक इज द ओनली क्लिनिक यू विल फाइंड इन इंडिया वे सारी साइंसेस which are associated with solving the orthopedic problem in the best possible are found. So we have physiotherapy, we have chiropractic. This is something new in India. In USA, if you go, you will find this chiropractor. Just like आपको MBBS डॉक्टर और फैमिली प्रैक्टिशनर हर एक कॉलोनी में मिलते हैं, आपको chiropractor भी हर एक कॉलोनी में मिलेंगे. बट इंडिया में साइंस नहीं है. हम इसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं. हम इवन डिग्री इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इसकी, ताकि इंडियंस भी पढ़ के इसमें करें. और हमारे फॉरेन टाई अप हैं जिससे हम ये साइंस थोड़ा यहाँ पर अपनी क्लिनिक्स में ला पाते हैं. सो बट दिस साइंस इज वेरी इफेक्टिव इन बैक एंड नेक ट्रीटमेंट्स, जड़ से ठीक करने में. एंड फुट ऑर्थोटिक्स, फुट अलाइनमेंट वगैरह आजकल बहुत ग्रोइंग साइंस है. आपने इंसोल्स वगैरह सुने होंगे, कस्टमाइज इंसोल्स. तो जब तक हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, जब तक उसका सॉल्यूशन निकलता, जो सॉल्यूशन में निकलता है. ऑर्थोपेडिक्स ऑफ कोर्स, दवाइयां हैं, सर्जरीज हैं, वो भी बहुत जरूरी हैं. पेन मैनेजमेंट, अनदर वेरी ग्रोइंग एरिया इन द मेडिकल साइंस एंड सर्जरी प्लस. तो ये सारी चीजें आपको एक जगह मिलती हैं. क्यों? क्योंकि पेशेंट को अलग अलग, जो आपने भी कभी महसूस करा होगा कि पेशेंट को अगर उसको फिजियोथेरेपिस्ट का अलग जाएंगे, ऑर्थोपेडिक्स का अलग जाएंगे, कायरोप्रैक्टिक का अलग जाएंगे. ऐसा क्यों? उनकी प्रॉब्लम एक है, तो हमें उनका सोल्यूशन देना है एक ही जगह. हमें बताना है क्या ठीक है क्या गलत है. एंड दैट्स व्हाट वी एम टू प्रोवाइड इन आवर क्लिनिक्स. So in our clinics, we have a team of highly skilled people. This is very unique. तो ये अलग है, मैंने बताया ये सब अलग है. मैं सब बता रहा हूँ, सब अलग है जो इंडिया में कोई नहीं करता. और आप करेंगे, आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो. And we have a highly specialized team of physiotherapists and high level of talent, जो कि और पाया जाता है बट इतना नहीं पाया जाता. प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच, प्रोटोकॉल्स. नाउ इन इंडिया प्रोटोकॉल ड्रिवन मेडिकल साइंस इतनी नहीं है. वेस्ट में आप जाओगे तो बहुत है, वो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं. ये मैंने इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का आपको बताया. स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, बेस्ट इक्विपमेंट. जो अगर आपका इक्विपमेंट सबसे अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो वो है. एंड इन अ फ्रेंडली नेबरहुड एनवायरनमेंट. आपके जो क्लिनिक का एम्बियंस है, क्लिनिक की सर्विस है, इट्स मोर फ्रेंडली. इट्स नॉट कि आपको डॉक्टर का 10 मिनट देख के भगा रहा है बस फटाफट करके. यहाँ पे आएंगे तो आपको एक फ्रेंडलीनेस दिखती है, जो कि बहुत जरूरी है पेशेंट के लिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% एथिकल प्रैक्टिस. कोई हमें एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं बताना है जब हमें नहीं है जरूरत. कोई हमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करना है, नहीं है जरूरत. एट द सेम टाइम हमें इसको प्रॉफिटेबल कमर्शियल भी बनाना है. ना वो कैसे कर सकते हैं हम अचीव, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीजें करके जो कि और कोई नहीं कर रहा. एंड विच आर बोथ मेडिकली गुड एज वेल एज कमर्शियली गुड. सो जिम्स की हमने बात करी. सो इसमें द की कंसेप्ट मैंने थोड़े आपको बता दिए. इज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. दैट्स आवर पंच लाइन. बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. And be strong in your 40s, energetic in your 60s, and keep moving even in your 70s, 80s. आप इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो पाए. ये फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं, ये नहीं कोई ये एक्सरसाइज जो ट्रेनर्स होते हैं वो नहीं कराते हैं आपको. और हमारी जो मशीन्स हैं वो बहुत स्पेशल है, जिसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आपको. और सिर्फ यहाँ पे आपको हफ्ते में 2 बार ही आना पड़ता है, आधे घंटे के लिए. ना इतना टाइम नहीं होता आजकल लोगों के पास बार बार आने में. स्टिल 2 बार आने में यू हैव द सेम इफेक्ट विच यू विल गेट इन. एंड क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ दीज मशीन्स विच आर देयर, विच आर वेरी गुड इन आइसोलेटिंग ईच मसल. तो हर एक, जो जैसे अगर हम बैक की मसल स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं या एब्डोमिनल स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, उन मसल्स को आइसोलेट इतना अच्छा करते हैं कि आपको आधे घंटे में ही, हफ्ते में 2 बार आपको इसमें उतना ही स्ट्रेंथ गेन हो जाता है, जिसमें बाकी जगह आपको बहुत बारी आना पड़ेगा. और बहुत सारी कुछ मशीन में खासियत है, ये मैं आपको बताऊंगा. दीज आर ऑर्थोक्योर मेडेक्स मशीन. आप गूगल करके भी देख सकते हैं, मेडेक्स एक्सरसाइज मशीन करके या मेडेक्स मेडिकल मशीन करके. गूगल करके देखिए तो उसमें आपको पता लगेगा. ये मशीनें यूएस में इन्वेंट हुई थी 1980s में, और यूएस यूरोप में पिछले 30-40 साल से यूज हो रही है. एंड
now the opportunities, we started manufacturing these machines in collaboration with a German collaboration. एंड देखिए दुनिया जैसे पलट रही है कि पहले काफी काम वेस्ट में होते थे, अब इंडिया में आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ये मशीनें सिर्फ यूएस एंड यूरोप में मैन्युफैक्चर होती थी, और आज की तारीख में ये गुड़गांव में मैन्युफैक्चर हो रही है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जर्मन कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है, और ये मशीन वापस हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और यूरोप और यूएस जैसी जगहों पे जहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, वहां पे भी एक्सपोर्ट देम, एंड we exclusively use them for our clinics, and now we are going to provide them exclusively for our franchises. So we are not planning to at the moment give it away to anyone else, ताकि एक्सक्लूसिविटी रहेगी, आपके पास सिर्फ ये मशीन्स होगी। एंड जैसे मैंने कहा, आप गूगल करके देखिए, सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर बैक एंड नेक पेन, एंड ऑल्सो they for our 40 plus gyms जो मैंने बताया, 40 to 80 year age group के लिए, they are very specialized machines which are there. So this is our uniqueness. Plus we are also manufacturing a lot of products which are used for patients. तो ये भी आप अपनी क्लिनिक्स में सेल कर सकते हैं, उससे एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन होता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट सेल में करके, प्लस पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। क्या है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे एडजस्टर है, ये कायरोप्रैक्टर्स यूज करते हैं, ये इंडिया में कोई नहीं बना रहा। जैसे मैंने आपको बताया, न्यू साइंस है इंडिया में, ये यहाँ पे है। पिलोज, स्पेशल पिलोज हैं सोने के लिए, जिससे नेक पेन वगैरह डेवलप नहीं होता। ऐसे ये बेड्स हैं, और पिलोज, ये सीट में बैठने का पिलो है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम मेडिकल इक्विपमेंट और पेशेंट्स के लिए बनाते हैं, जो आपको क्लिनिक्स के में मिलेंगे यूज करने के लिए, प्लस पेशेंट्स को सेल करने के लिए। तो दैट्स समथिंग यूनिक, नो अदर कंपनी इन इंडिया इज डूइंग। सो ये सब हर एक स्लाइड में मैं आपको रीजंस हैं जो कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा, और आपके लिए ये क्यों हमारे साथ जुड़ने का फायदा है। more reasons, we have been pioneers, like I said, नई चीजें लेके आ रहे हैं, तो pioneers रहे हैं। So we are the only clinic where all these sciences, मैंने बताया, under one roof। हम we were the first ones in India to get these machines, medical lumbar machines, medex की spinal decompression treatment in India, फुट इन सोल्स की नई मशीन, मैट्रिक्स थेरेपी की। सो ये अभी कुछ कुछ लोग और भी करने लगे हैं, बट ऑब्वियसली हम एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं ताकि हम नई नई इनोवेशन यहाँ पे ला सकें। नाउ हमारा अगेन वैल्यू प्रोपोजिशन आपको है कि वन, we have decades of management experience, myself, Dr. Meedle, and other people who are behind managing this. You get world-class ambience and international standards of orthopedic solutions, as well as gym facilities, safe, ethical processor, technology is important, software आपको मिलेगा, training support मिलेगा। नाउ आप ये भी सोचेंगे कि ये वर्कआउट प्लान्स हमारे सारे पर्सनलाइज्ड होते हैं, एंड सारे कंप्लायंसेस वगैरह करके हम करंटली गुड़गांव में ऑपरेट कर रहे हैं 3 लोकेशंस में। अब वी आर वांटिंग टू एक्सपेंड ऑल ओवर इंडिया, एंड आरडीएल हमारी, सो ये सब कारण है, मैं कहूँगा व्हाई, व्हाट मेक्स अस स्पेशल। सो पहले मैंने आपको बताया क्यों आपको इस लाइन में जाना चाहिए, फिर मैंने आपको बताया क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, एंड अभी लास्ट पॉइंट वुड बी कि इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रोफाइल, कौन लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। आवर आइडियल प्रोफाइल इज नंबर 1, पार्टनर विद परसिवरेंस एंड पेशेंस टू रन डेली ऑपरेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी नई चीज होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है। हमने ही बहुत समय हमें लगाया है, मेहनत लगाया है इसको सीखने में, लर्न करने में। पहले आप लोग कहेंगे कि हमें, अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस से एसोसिएटेड है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बट हमें एडवांटेज क्या है, आई कम फ्रॉम द एंगल ऑफ अ पेशेंट, कि पेशेंट को क्या चाहिए। मुझे इसका इंस्पिरेशन भी ऐसा पेशेंट जो एक्सपीरियंसेस है उसी से आया, और तो हम एट द सेम टाइम, लाइक मैनेजमेंट में हमारे साथ डॉक्टर्स भी एसोसिएटेड हैं, डॉक्टर मीनल हैं, डॉक्टर रुचिता हैं, और भी बहुत डॉक्टर्स हैं टीम में। तो वो है, और जो मेडिकल पार्ट होगा उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे। फ्रेंचाइजर का यही मतलब है कि कहाँ
जो आप में है वो हम नहीं ला सकते, जो हम दे सकते हैं, जो आप पे मिसिंग है वो हम दें। सो जो मेडिकल पार्ट है वो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू ऑनगोइंग support through software which is there, and we have built our SOPs and protocols according to that. You should have sufficient fund capacity and good location, and आप बाकी आपको प्रायर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी ठीक है, बट वो चाहिए थोड़ा बस enthusiasm to do well. And if you are an independent orthopedician and physiotherapist, and if you want to, you believe in these concepts which we are talking about, this is the future. If you think, then you would be welcome to associate with us. And what's also important is if you are, you should be linked to franchise. हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए एक जगह बैठ के वो बिल्ड करना मुश्किल है। आप लोग उस लोकल लोकल मार्केट में, लोकल नेबरहुड में आपका नेटवर्क होगा, तो उसमें फिर आपका आ, आ, उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप मैनेज कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर बिल्ड ऑफरिंग इज अ फोफो मॉडल. For those who are not familiar, so it's you will be running the clinic, and इसमें वी विल प्रोवाइड द ब्रांड गाइडलाइंस, एंड आपकी ओनरशिप होगी, इन्वेस्टमेंट्स आपके होंगे, एंड रेवेन्यू और वो सब ऑपरेशनल कॉस्ट आपका होगा, एंड फ्रेंचाइजी यू हैव टू पे अस अ इनिशियल फी एंड आल्सो रेवेन्यू शेयर विच इज देयर. सो दोनों हमारे इकट्ठे ही चलते हैं। हाँ, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ, मेडिकल सेंटर और ये जो क्लिनिक है, लाइक वी सेड, इंडियाज फर्स्ट चेन ऑफ क्लिनिक्स फॉर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एज वेल एज फॉर जिम, ये दोनों इकट्ठे हैं। इकट्ठे क्यों हैं क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, मेडिकली एज वेल एज जिम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो क्लिनिक्स हैं विच आर फोकसिंग ऑन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, वहां से जो पेशेंट ठीक होते हैं वो एक जिम में ट्रांजिशन हो जाते हैं। जिम में क्यों ट्रांजिशन होते हैं? क्योंकि उसके बाद एक बार ही आपका पेन ठीक हो गया तो आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो मेडिकली वो लोग, काफी लोग कभी जिम में गए भी नहीं होते, तो उनको समझ में आ चुका होता है कि हाँ, मेरे लिए जरूरत है। तो ये तो एक मेडिकली उनके लिए करेक्ट है। दूसरा, फाइनेंशियली देखिए कि आपके लिए एक एक पेशेंट फ्लो मिल गया, कि पेशेंट आए क्लिनिक से, वो समझ गए कि उनके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है इन मशीन्स में, और फिर वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। कुछ जरूर ड्रॉप आउट होंगे, बट बहुत सारे नए आते जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड रेवेन्यू मॉडल एज वेल एज एंड अ स्टेबल रेवेन्यू मॉडल, क्योंकि एक बार ही आपके मेंबर्स बन गए तो वो थोड़े बहुत गिरेंगे, लेकिन फिर नए आते जाएंगे, तो आपका एक रेवेन्यू आता जाएगा, और फिर आपका और एक बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट है आपका क्लिनिक से, जहाँ से आप समझा सकते हैं लोगों को कि ये है। और काफी लोग तो डायरेक्टली भी आते हैं, कि वो 40 to 80 का एज ग्रुप अट्रैक्ट होके कि हमारे लिए जरूरत है, तो वो आ जाते हैं। और क्लिनिक्स में आपको बता ही दिया है मैंने, बहुत सारी यूनिकनेस जो है, जिस तरह से हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली बैक और नेक के, वो जो हमारी मेडेक्स मशीन्स हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग क्रॉनिक बैक एंड नेक। लोगों के सालों के पेन होते हैं, वो हमारी क्लिनिक्स में आते हैं, फिर वो ठीक होके जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेडेक्स मशीन एंड एक स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन्स, और जो फिजियोथेरापीज, हमारी एडवांस फिजियोथेरापीज हैं, और ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स हैं। तो ये आपको इसे दोनों होने, साथ होने, इकट्ठे हैं, मेडिकली भी जुड़े हुए हैं, और रेवेन्यू वाइज फाइनेंशियली भी दोनों का जुड़ा होना सही चीज है। और अब कहाँ पर हम देख रहे हैं ये फोफो मॉडल में, विथ लार्जली टारगेटिंग अपर मिडिल क्लास एरियाज इन मेट्रोज एंड बिग सिटीज, मे बी स्मॉल सिटीज ऑल्सो, आपको लगता है, लेकिन एक जरूरत इसमें ये है, जो आप समझ पाएंगे कि क्वालिटी जब ऊपर होती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। सो पीपल शुड हैव द एबिलिटी टू पे फॉर द क्वालिटी, नंबर वन। नंबर टू, एक साइकोलॉजी है, कल्चर होता है, कि कुछ लोग कहेंगे भैया हमें तो बस दवाई दे दो, हम खा के थोड़ा बहुत पेन ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाएंगे, हमारे लिए काफी है ना। वो एक सेगमेंट है, वो भी अपनी जगह ठीक है। दूसरा एक सेगमेंट है जो कि चाहता है कि मेरी ये बार बार दर्द नहीं है, जड़ से ठीक हो,
मैं दवाई खाऊंगा, आज ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद फिर दर्द आएगा, मेरी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं अपनी लाइफ अच्छी लीड करना चाहता हूँ। वो एक कल्चरल आउटलुक चाहिए। वो टिपिकली धीरे कुछ कुछ तो अपर मिडिल क्लास में एरिया आता है, यहाँ कुछ आपकी हर एक सिटी का, जैसे आपको पता है इंडिया is a mix of 1,000 cultures, so each culture is different. अगर आपको लगता है कि आपकी सिटी में स्ट्रांग है वो कल्चर है, तो वो फिर आपके लिए सूट करेगा। फॉर एग्जांपल, कल ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई ना, ऑस्ट्रेलिया हैज वन 6 out of 10 वर्ल्ड कप, लाइक क्यों? एक मेन रीजन है उनके ऑस्ट्रेलिया में द स्पोर्ट्स कल्चर इज वेरी स्ट्रांग ना। ये वाला हमारा वाला भी मॉडल है, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सक्सेसफुल है। एंड तो जहाँ आपको लगता है कि ये कल्चर है आपकी सिटी में, जहाँ पे लोग पीपल इसमें बिलीव करते हैं, तो देन इट मेक्स इट इजियर। ऐसा नहीं और जगह नहीं होता, बट और जगह भी है, सब जगह पेशेंट तो सब जगह है जिनको बैक और नेक पेन है। पेशेंट वो लोग सब जगह है, 40 to 80 एज ग्रुप के जिनको जरूरत सब जगह है। लेकिन कौन इसको लेता है, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी उन जगह हो जाती है अपर मिडिल क्लास एरियाज में। तो वो एक आपकी रिक्वायरमेंट वो तो बेटर होगी। एरिया अबाउट हमें चाहिए होता है 1100 से 1500 स्क्वायर फीट के बीच में, एवरेज लेट्स से 1250 स्क्वायर फीट। द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज फॉर 5 years, which is there. And like in a franchise will open a clinic and a gym alongside each other. Plus we will offer you, like I said, Orthocure manufactured special Medex medical equipments and other medical equipments, as well as products which you can sell daily to patients. So this whole package we are providing to you in a very unique way, which no one else in India is doing. जिस चीज की आज जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिसकी आगे आने सालों में और जरूरतें बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और लोग इसको अडेप्ट करना चाहेंगे आगे आगे कुछ सालों में। सो मैंने ये थोड़ा बता ही दिया फ्रेंचाइज और ऑर्थोक्योर का जो रोल है, और नॉर्मल है फोफो मॉडल में काफी आप लोगों को पता भी होगा। सो फ्रेंचाइज, एज अ फ्रेंचाइज यू विल सेट अप द सेंटर, you will hire the team which is there to manage, and we will be helping you in how to hire, and पूरा आप मैनेजमेंट आप करेंगे उस सेंटर का। जो आसपास की मार्केटिंग है वो भी आप ही करेंगे। हम अपने आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? विल प्रोवाइड यू नो हाउ, गाइडेंस ऑन ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये पूरा कंसेप्ट, प्रोवाइड यू एसओपीज, ट्रेनिंग मैनुअल्स, सपोर्ट इन इंटरव्यूइंग एंड रिक्रूटिंग द राइट टीम, ट्रेनिंग योर सेंटर टीम। आपको बेसिकली खड़ा करके भागने के लिए तैयार कर देंगे, और जब आप भाग भी रहे होंगे तो भी आपको हेल्प रहेगी, हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा। एंड in terms of software which is available, then continuous training which will happen, national level marketing which will continue to do digitally and all, brand create करने के लिए, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना आपको जो आप सेल कर सकें पेशेंट्स को, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मशीन्स की मेंटेनेंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। So now I would hand it over to Samarth, who would take you through the financials. Samarth, please, Thank you. over to you. Sure. Thank you so much, Mr. Sunil, for the information. It was a really interactive and insightful session for all the investors. So, friends, what we have as a financial setup is the 1,250 square feet that we're taking on an average of a total size that we're looking into, with an investment of a bracket 55 to 60 lakh rupees. This includes your franchise fee amount, which is 3.5 lakh rupees. So this investment, if you have to break it down, about 15 odd lakh rupees goes into the setup of the clinic plus the gym, which is there. So all the setup which is there, and the majority of the investment goes into the machinery, which is about 35 lakh rupees. I have to highlight this. It is the Medex equipment that Mr. Sunil mentioned. And we also have to highlight the fact that these equipments, because of the fact that we are able to manage, have that quality standards and have the framework, we are able to save a lot of cost for our partners. So same machines, if you have to import it and others, it may cost all up to 1 CR as well in certain cases. So we have to, this is where our speciality comes in, not only the services that we're able to offer, the quality that we're able to offer, but also the equipment
the price point that we are able to offer to all partners, so that they are successful, they have the latest machines and they have the latest equipments. It is also useful not only for the clinic services, but also for your medical gym that we are looking into, because it's very important. 40 plus is a population audience where there are different problems that occur, and it is very important for them to have the right medical knowledge when they are exercising and having the fitness, not only during the treatment, but as Mr. Sunil said, even after that, to remain fit. So that is where the equipments come into the picture, and that is where the experience, and that is also what will drive and pull the customer towards your clinic, plus also your medical gym, which runs side by side as a separate entity as well, where people can come for the center and the treatment, and they can also come for the medical gym itself with the membership as a better alternative, especially for the age group that we are looking into. Revenue anywhere from 1 to 1.5 CR is something that we've seen, and is something that partner on a reasonable level through their medical expansion of the gym as well, plus also the treatments that we have, multiple treatments that we have. The brand commands 9% of the royalty on the services which are there. The products and everything would be provided to you separately as an additional revenue stream, as Mr. Sunil just highlighted in the previously. What we're looking also is a payback period, typically about 20 months is something that you can have. Depending on the location, it could be much faster, and also for more conservative location also, we can look into within 2 years for all the markets that we're into. Also looking at the services is very important to highlight. The medical gym gives the users and the customers an advantage over a traditional gym, where we are able to have personalized exercises, personalized sessions for group sessions for all the people or the clients and the customers who are coming over here, because we have batches, small batches, more focused, experienced trainers who are medically trained, medically certified they also with the supervision. So it's not only a normal exercise or a different way we exercise, but it's also medically backed exercises, which is a huge advantage that we have over all other gyms and others, where we are having individualized programs plus also personalized exercises, so that there are different ways that we exercise, there are different dynamics that we exercise, and also the machines that we are using is more targeted on the problems, and also focusing on the certain aspects that helps any individual who has over 40 years to get that right training. So this is a good opportunity all the investors. As Mr. Sunil mentioned, we have the clinic and the treatment each and every customer would get that service and would question answer around as well. So please feel free to put your questions on the chat box. Thank you, Samarth, and thank you, Sunilji, for presenting this wonderful opportunity to all our investors. Samarth, we can remove the slide. And my request to all of you would be, friends, if you have any questions, some of you have asked to give more information and shared your contact details. We'll be happy to take any discussion one-to-one offline after the webinar. But I'll quickly recap the opportunity, and anybody who's keen to explore further can reach out to us. I'll also request Neha to put our hotline number and email ID to connect with us. And quickly on Sunilji also, while I heard him giving his own background. So he's obviously the founder and CEO of the company. And he also comes with a great background, being a mechanical engineer from Delhi and university where he passed out of. And he also has a stint with companies like Scott's and Bale, which he worked with before he came on and started his own entrepreneur journey in 2013. And he chose this particular field because the problems, especially if we talk about orthopedic problems,
this is a big area to be pursued because there's a big demand which is also currently unmet. And if we consider India, the opportunity is even bigger than the global market. The Indian orthopedic market is growing even faster when it compares to the global growth rate. And the reason behind is many, right, which includes obviously diseases which are diabetic, obesity is one reason, osteoporosis is another reason, and many lifestyle reasons which create and kind of add on to the problem, which have been wonderfully explained by Sunilji. Now the opportunity very quickly is about franchisee and franchisee operated, where the company would offer the franchisee, would give you all systems, processes, how to run, and the franchise. Are you saying something, Sunilji? Ma'am, he's on a call. I've muted him. Okay. Now, if you look at the healthcare economy also, it is very vast. When I say it's very vast, it includes many categories under products and services, offering preventive, curative, diagnostic. And I would say it's gone beyond just medication and treatment, also includes lifestyle management. So the need of today is to have a provision of a collaborated, integrated, and most important, I would say, user-centric services, which Orthocure has integrated in their business. So they're an integrated player. When I say integrated player, they manufacture the equipment and they also provide all treatments and services to the patients. And the manufacturing is based on their own diagnostic of what is appropriate for the patients. Right? So they develop appropriate equipment, which is need-based, manufacture these products in this domain, and they have been selling not only in India, but abroad. They have a great network of hospitals for surgeries. If any patient which needs surgery, they can also be referred by Orthocure to the network of hospitals which they currently have tied up with. And I personally feel healthcare and education, these are two big industries which will always remain sunshine industries. And especially the profile of people we need is one who come with some kind of maturity of running a business and come with a long-term mindset. Right? So it is franchisee and franchisee operated model. We don't require a huge area. About 1,250 square feet is the ideal area requirement, but we need good neighborhood markets. Best if it is surrounded by also similar businesses or I would say clinics in the neighborhood. You require an investment which includes 55 lakhs, which takes care of your entire interior investment. It takes care of your franchise fee, which is very small component in this case of 3.5 lakhs. And the rest of the investment goes into equipment, which comparatively is a higher ratio of the overall investment they have put in the model. But I would say overall, they have rationalized the model with the cost of the machine, which is not very, very high because the entire supply of the machine is directly done by the company. The business model is great because you get repeat clientele. There's regular clientele that comes to you as a treatment or also in certain cases long-term. And there are also services beyond the treatment which the center would offer, which includes services of gym. So very quickly, we'll take some questions. Friends, you keep writing in. And Sunilji, jo main pehla question lungi, while I think there has been a lot of detailed understanding on the overall business model, but I'll take some questions on, how the revenue model actually works. So we understand the investment which is required, but if we can take maybe 5 minutes out to explain how the revenue model works, typical, a cycle of a patient to be treated, typical, ticket size that we consider. And while the overall ROI, which I see is about 18 months approximately, which I saw in our projections, but what does it take to come to an optimum level? How many patients would a center need? If you can share those details. And friends, keep writing, and I'm seeing some questions coming in. We'll also take your questions. You're on mute, Sunilji. Yeah. Can you hear me now? Yes, yes, absolutely. Yeah, okay. Yeah, so how process works is that patient first comes to our clinic with typically a pain, back pain, neck pain, arthritis, or sports injuries, and then they either go to an orthopedic doctor who gives them the medicine for pain relief, or they go straight to a physiotherapist or orthopedic. Some cases need not refer to physiotherapist, but in a lot of cases they refer to the physiotherapist. Now, physiotherapy sessions typically
are between 8 sessions to 24 sessions. So average is around 10 to 12, you can say. Now these sessions are required क्योंकि हमारा क्लिनिक में जैसे मैंने आपको बताया जो दवाइयां हैं, they are essentially to relieve the anti-inflammatory drugs which relieve pain for a while, but real solutions for these problems are correcting your posture, strengthening your muscles, strengthening your misalignments in your skeletal system, which chiropractors do. Physiotherapists come in with their treatment for the tissues and for the muscle strengthening and other things. So plus are these MEDEX machines and other technologies which we have. So yes, normally they 8 to 24 sessions hote hain, and average price of each session is about 1,000 rupees. So then you from each patient you tend to earn about in a physiotherapy session around 12,000, 13,000, and then you have then patients after they finish. That's the beauty of this model. If you have both the gym and clinic together, then they transition to the gym. Not all will do, but a good Yes. percentage will do. And even if 20% move to gym, then we are fine, because what we are looking for in this model to work well is for clinic about 60 new patients every month, and for the gym membership we are looking to build it up to 150 members. So typically, like आप देखेंगे large size gyms will have 500, 600, 700 members or more. Now this our gym is more of a boutique, a club, a specialized, like someone mentioned, specialized, personalized training, specialized machines, and the environment is also like more like a boutique club. So 150 members, and they have various monthly, quarterly, yearly, semi-annual plans. Yeah, more questions which are coming on the pricing structure. Now, apart from the physiotherapy, are there other services that we would provide? I saw some questions pertaining to the various services. I heard you also mentioned when we were going through the presentation also. Yeah, And so if you allow me, maybe, I was going to the website. I would like to present your website to all our friends who are there, and it might become relevant for everyone to clearly understand the various treatments. So Sunilji, if you want to maybe take on, I can scroll down, or wherever you want me, I can click. But quickly, if you can tell what these services are on an average. Yeah, so you can maybe click on doctors and specialties, your left mein hai, after home. So these are the services which are there. Now, each of these services are offered separately also, like orthopedist, doctor consultation hoga, or physiotherapist ka consultation hoga, treatment sessions honge, same chiropractic. Then ये foot orthotics है, for example, उसमें insoles बनाने की हमारे पास machines होती हैं, तो customized insoles will be there. So all these are there. At the same time, we also offer products and medicines. Medicines are sold, so that's another revenue line. Then products selling, like I told. Then also, yeah, X-rays and MRIs के साथ tie-ups होते हैं हमारे पास around the place. In some of our clinics, that's an option. We have X-rays in our clinic also, but that cost an additional about 10 lakhs of investment. So people can do X-rays there as well, and that's another revenue line which is there. And gyms ka to revenue line membership hi hai, membership se. Correct. And these are annual memberships? Yes, there are monthly, quarterly, 6 monthly, and annual memberships. Now, Sunilji, can you also explain typical expenses related to operating a center of this nature? What we have projected is an average revenue of about 8 to 12 lakhs annually, right? So what are the expenses related to it? And when it comes to also hiring the team, practitioners, will there also be any kind of support and training given to them? I think there's one common question which comes across from many. Yes. Samath, would you like to answer this question in a bit more detail? Samath? Sure, we'll do that. Expenses part, yeah. Yes. So there are different, one would be the initial setup cost that anybody wants to have, which we had discussed earlier with the equipments and other costs, which is there. The revenue that we look into are different streams. Primarily what we see is through our therapy and treatments being one of the major sources, and also the gym membership, and which are the bigger sources for us. So on an average, what we see revenue over a 5-year period
period or on an average, we say about 10 lakh rupees that we are able to get every month, which is there through different services, 8 to 10. And in certain cases, in locations, we've also managed to get more than that as well. So 8 to 12 would be the right figure per month that we can expect. Services and the revenue stream that we see, first is the therapy and treatments that we have, the medical gym business also. The other sources, as Mr. Sunil had mentioned, it would be the consultations, online consultations, there could be certain procedures, and there are also the medical equipments, insoles, and others that are provided to help facilitate the treatment and aftercare as well. So there are multiple sources for us, so 6 to 7 sources of revenue, which is available to everybody. Majority of the expense goes into your salaries, apart from the rentals, which are typically there. Salaries, because we need to also have right staff, which is very important, who are medically trained, and also support staff to help the doctors who are there. We'll also have other expenses, which are basically your utilities, electricities, basic expense which are there. So it's on a cycle of there are medical treatments and expenses. So overall, if you say a monthly expense is somewhere around say 50,000 to 70,000 that we have, depending on the location and the opportunity which is there per month. And also looking at the opportunity, if we say the equipment, AMCs, and everything, we are supported by the brand, and the brand would be helping all the partners out with that as well. So you don't need to have a separate team of engineers to have that. We have the expertise. We'll be able to provide that AMCs to you as well. Thanks so much. And Sunilji, one question which I also want to take, I see a question from Preeti Charan, and the question is, what is the criteria of people having an existing clinic? I think what she tries to understand, if somebody's already operating a clinic, is there a opportunity for them to take a franchisee of Orthocure or not? And I'm sure there might be other people who might be from similar industry, and this might be complementing to what they do. Yeah, so I guess if you are having clinic, you're from this background, obviously helps. So you're more than welcome. There shouldn't be any conflict of interest, and that's important. So there should not be two offerings running to same patients in parallel. But I think the best thing is we should start the discussion with you, and then we will come to I guess a good solution on how best to take it forward. Very helpful, Sunilji. And friends, my request to all of you would be, I see some questions which have also been flashed, and we have answered that in the course of our presentation. We've also shared our details in our hotline number and the email ID that I would request all of you to reach out to. And we'll be happy to connect with Mr. Sunil post the webinar. Please share your profile, your city of interest. If you come with any kind of complementing background or experience, that would also help us to understand your interest in detail. And before we close, Sunilji, I'll request you to share maybe a message with everybody who's listening live and on the webinar. Yeah, sure. Thank you so much. In fact, I was hoping you would give me this chance. So, see, I am personally really passionate about this. It's not just the commercial thing, but it's also we are giving back to the society, and it's the need of the hour. I think if we are together, if we are able to create a brand all over India, providing these services, so not only will we gain personally in having done something good and also financially successful, but I think it's a movement. It's a movement to solve this big problem which we have in India today. And it will be great if you can join us in this endeavor. Thank you very much. And thank you very much to Franchise India, I would say, for giving us this opportunity of this platform to take it to everyone. I don't think without your support, we can branch out to all over India. So really thankful to you, and looking forward to working with all of you together. Thank you. Thank you so much, Sunilji. And friends, just to answer, they're currently running out of Gurgaon. They have locations which are owned and operated by them. I saw a question from somebody where we operate, and they're giving a great solution since hospitals, they get your vitals in place, and they don't have too much of engagement post-recovery. And super specialty hospitals don't focus too much on preventive and recovery. And that's where the solution of Orthocure really comes in. And healthcare also as an industry, as an opportunity, is a great investment opportunity for somebody who comes with a
mindset of long term. Thank you once again, Sunilji, and I'll request Neha to kindly take over now. Thank you so much, ma'am. Thanks all the panelists for coming on this webinar and sharing so much details with our participants who are watching you live. Guys, we try to answer all your queries. If there is anything you want to discuss with us, you can reach out to us on our hotline number, which is 9717683838. You can reach out to us and write us at feedback@franchiseindia.in. The details are already being shared into the chat window. Also, tomorrow again, we are coming up with a new business opportunity for all of you. With Silvo Style, I have already shared the screen. Silvo Style is a sterling silver jewelry brand. I have shared the registration link into the chat window. You can register yourself today only to join us tomorrow at 12 p.m. Silvo Style is a sterling silver jewelry brand from the legacy brand of PNG Jewelers, which is very much there in the market, which is a famous brand since 1832. They have come up with a new brand called Silvo Style, dealing into the silver jewelries only, and the investment start with 25 lakh rupees. So to know more details related to this brand, how to start your business opportunity with this brand, please join us tomorrow at 12 p.m. with the link I have shared in the chat window. Thank you so much everyone for joining us. Have a lovely day ahead. Thank you.